There has been a successive drop in the GDP growth, over some quarters, and there is a historical sort of example. There is a historical experience that every country which has taken on fundamental, and I want to emphasize the word fundamental, which has taken on or tried to do fundamental governance reforms, has had seen some shrinkage in the output, because the rules of the game, the rules of engagement are changing. And to that extent, I think this is what we are witnessing now, and which I think came to me from a very wise old man who was standing in a queue when the demonetization exercise was going on, who said, "Why are you supporting it? इतना सब इसमें तो बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है?" तो उसने बहुत अच्छी तरह से कहा था, समझा के उस पत्रकार को कि भैया कभी कभी छलांग लगाने से पहले 2-3 कदम बीच से लेना पड़ता है. So that may be happening. There are lots of work in the progress. And I've seen this at close quarter as an outsider. Now I'm becoming an insider. That there is so much work in progress that I assure you this quarter will be seen for what it is, just a mere blip in the GDP statistics, including automobiles and so on and so forth. So that was the period where people were destocking, they were not sure, and production had come to a reasonable slowdown. The second reason is, of course, just simply statistical. Which is that you had a manufacturing growth of 10% in the previous quarter, April to June 2016. So therefore, with that higher base, you would expect something going on here. And the third one, which the Chief Statistical Officer, the Chief Statistician of India, Dr. Chisanand explained, is what is called a deflationary effect, a WPI deflationary effect, which is that the deflator effect. The WPI was negative at that time, for after a very long time, and it became positive in this quarter, so that the swing was very high. So these are those statistical aberrations. I must plead with you to not take that blip, that this quarter's figure as any kind of a trend, and to say, and therefore, with all due respects, he was my mentor in some sense. I worked with him, to Dr. Manmohan Singh, etc. This quarterly data cannot be used to say that, oh look, I told you that the GDP will drop by 1.2% or 2.5%. I don't think that's right, and I think the reasons are very contingent. And just one final thing, GDP की गिरावट में डिमोनेटाइजेशन का कोई भी हाथ हो ही नहीं सकता. वो इस वजह से क्योंकि डिमोनेटाइजेशन शुरू हो चुका था जनवरी के पहले हफ्ते में, और जैसा कि लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने भी कल कहा, और वो कई बार कह चुके हैं, कि वो 6 हफ्ते का पीरियड था, 8 नवंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक, जबकि करेंसी की शॉर्टेज थी. तो जितने हमारे बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्री एक पुरानी मॉनेटरी थ्योरी को लेकर, मॉनेटरी थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को लेकर, इनको जो ये अटकलियाँ लगाई थी कि 10% या 14% जो भी था, अगर इतनी करेंसी कम हो गई तो उसके हिसाब से इतना GDP गिरना आवश्यक था, वो बिल्कुल व्यर्थ था, क्योंकि वो सिर्फ 6 हफ्ते के लिए हुआ था, और उसमें भी करेंसी थी, मौजूद थी, और जनवरी से तो वो शुरू हो ही चुका था. और इसलिए ये कहना कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से अप्रैल से लेके जून तक की क्वार्टर में, उस तिमाही में जो है वो GDP की गिरावट जो है वो उसकी वजह से है, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही गलत है. लक्ष्य है और जो बड़ी मैंडेट है वो है कि गवर्नेंस कैपेसिटी को इम्प्रूव करना much more at the state level than even at the central level. दोनों जगह करना है. अगर स्टेट, जिसको कि प्रधानमंत्री ने कहा, the Prime Minister called it always the idea of competitive federalism, cooperative federalism, that has to be given shape here in NITI, because the ministries are far too involved in their own work, in their daily firefighting, in the sort of implementation of the ideas. That thinking, that implementation of how to get the states on the same page and pulling in the same direction, so that we also do this, we have the convergence that we are looking for, will be done here in NITI. And I hope these are the two very big sort of thoughts that I have. The idea, तो 2-3 चीज़ें बस बात आपसे करना है, वो ये है कि इसका नाम जो है ना, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है, निहित है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो ये प्रधानमंत्री ने सोच समझ के दिया होगा, मुझे पूरा यकीन है. वो दिया इसलिए है कि अब जिस युग में हम हैं, 21वीं सदी में, और जहाँ पर हम पहुँचे हैं, हिंदुस्तान जहाँ है,
वहाँ पर बिजनेस एज यूजुअल से काम बनने वाला नहीं, लीनियर थिंकिंग से और लीनियर प्रोजेक्शन से काम बनने वाला नहीं है। और इसमें मैं आप सब लोगों की भी मदद चाहता हूँ कि हम लोग नीति का जो मैंडेट देखता हूँ वो दुतरफा है। और वो दुतरफा ये है कि कैसे हम हाउ कैन वी ब्रिंग इन न्यू आउट ऑफ द बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशनल आइडियाज to turn around to make this economy a leading economy by the time we complete our 100 years of independence.